caire, working for a just world, where everyone's dignity is respected and promoted, and no one is left out of the opportunities that life has to offer. Starting its journey from Ireland in 1973, caire now touches millions of lives in over 20 countries worldwide and focuses on improving livelihoods, empowering women, removing social injustices, and responding to humanitarian needs. Since 2007, our country office in Pakistan has been supporting small farmers to attain their water rights, violence against women and girls, protecting bonded laborers, and assisting in humanitarian emergencies. caire and its 13 local partners are currently operating in 15 districts across Sindh, Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, and federally administered tribal areas, and reaching out to over 250,000 people every year. We know that violence against women has a devastating impact on economies all over the world. It really does a lot of damage to families and to communities, and it's vital that governments around the world take assertive action to address violence against women. As part of that assertive action, it's important that we provide care for women and girls when they experience violence in their homes and in their communities. It's also important that we work to reduce the tolerance to violence against women and girls, so working with men and boys and opinion leaders in communities. So I think caire in Pakistan, with their work on gender-based violence, would like to see a strengthening of our engagement with the government, including Darul Imams, medical legal officers, and also increased engagement with the police as frontline responders to violence against women and girls. And we'd also like to see a strengthening of our work with civil society to make sure that we have diverse actors available to support women and girls. Violence against women and girls, being a flagship program of caire since 2012, targets 8 districts of Sindh and Khyber Pakhtunkhwa provinces of Pakistan, with the overall objective of reducing tolerance towards violence against women and girls, with the financial support from the Australian government totaling 8.3 million Australian dollars. Resulting into the expanded scope of activities, the program operates in cognizance with Pakistan's National Action Plan and contributes significantly to the achievement of Pakistan's commitments under the Sustainable Development Goals, especially SDG 5, focusing on gender equality and women empowerment. The program offers a variety of protection, counseling and support services to women and girls affected by violence for its reintegration through its 2 free shelters, legal aid centers, and 2 helplines. More than 7,000 survivors benefited from program services over the past 4 years. न सिर्फ हम ये दे दें लीगल एड, साइको सोशल सपोर्ट, बल्कि हम क्यों ना हो सकता है किसी घर पे में तशद्दुद हो रहा और वो ज़ख्मी हो चुकी हो, तो हमारे पास एक मोबाइल यूनिट होना चाहिए. तो हमारा नेक्स्ट जो नया अमल है वो ये है कि हम एक मोबाइल यूनिट, उसमें डॉक्टर हो, नर्स हो, ताकि चाहे वो कुआं तक पहुंच सके थ्रू पुलिस स्टेशन, कंसर्न पुलिस स्टेशन, वहाँ से उस औरत को उठा के सेफ साइड पे जो हमारे दारुल अमान है, जो हमारे क्राइसिस सेंटर है, वहाँ पे लाके हॉस्पिटल ले जाके या और उसके हुकूक के लिए जंग किया जाए. Capacity building activities under the program resulted into a total of 3,183 trained personnel from police, judiciary, medico-legal and other related government departments, as well as the lawyers community, to be more responsive against violence against women and girls and provide preferred services to vulnerable women, while 400 local body representatives were sensitized on local systems and laws protecting women from various types of violence. caire से हमारा काफ़ी पुराना वास्ता है, वाबस्तगी है, और काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हैदराबाद में जिनका मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कि जैसे एक NGO है आबाद, उनको वो सपोर्ट करते हैं और उन्होंने एक सेफ़ हाउस बनाया हुआ है. और हम बजाय दारुल अमान के प्रेफर करते थे कि जब भी ऐसी ख़वातीन विक्टिम्स हों तो उनको उनके पास भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा केयर होती थी, ज़्यादा ख्याल रखा जाता था, ज़्यादा सिक्योर माहौल था. उसके अलावा caire की मदद से वहाँ पे हमने एक 15 टाइप सिस्टम इस्टेब्लिश किया है, जिसमें क्विक रिस्पांस के लोग हमारे बैठते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, मैन पावर है और टेलीफोन लाइन्स है उनके पास. तो हमारे 15 के साथ ही वो बैठते हैं और वहाँ पे उनका मकसद भी यही होता है कि क्विक रिस्पांस. caire से हमारी काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग्स की ट्रेनिंग्स के सिलसिले में भी हेल्प होती है. For the prevention of gender-based violence, caire adapted a new approach
called SASA under the program. Community theatres, power posters, quick chats, community conversations, card games, essay competitions, public events and media exposures are key activities through which community men, women, youth, community leaders and other stakeholders are engaged to discuss and challenge power imbalances between men and women. जो ये मर्द और औरतों में जो ताकत का तवाज़ुन है, अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए और अब हमें खुल के जो बोलना चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए. As a result of these activities, it was reported that 4,100 men, 4,900 women, 9,000 youth members were taking small actions to prevent violence and power imbalance in their communities. हमने तब्दीली इसे लाई कि लड़के और लड़कियां इकट्ठे बैठी सेक्शन हुए मुख्तलिफ. अभी जो है क्या सेक्शन हो रहा है, हमारी गाँव की बच्चियाँ आज से 100 किलोमीटर दूर जाके जॉब कर रही हैं. किससे? इसी तब्दीली यहीं से स्टार्ट किया. 4,000 men, 5,500 young boys were convinced that it was wrong to commit violence, while 3,100 women, 2,500 girls were able to recognize their power and come forward to break the silence about power imbalance and violence. सासा अफ्रीकी ज़बान सिवाली का एक लफ्ज़ है और इसका मतलब है अभी. अगर हम उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनेगा अभी. और अभी से मुराद क्या है कि औरतों पर तशद्दुद के ख़ात्मे की ज़रूरत फ़ौरी है. बुनियादी तौर पे ये अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया एक अप्रोच है जो कि युगांडा में पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ आज से कोई 6-7 साल पहले. हमने इसमें तब्दीली ये की कि अपने पाकिस्तानी कल्चर को देखते हुए और अपनी हक़ाइक़, अपने ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए इसको थोड़ा सा तब्दील किया अपनी ज़रूरियात के तहत. अब तक हम दो जो हमारे फेजेज़ हैं, यानी पहला फ़ेज़ स्टार्ट का और दूसरा फ़ेज़ अवेयरनेस या आगाही का, उसकी एडेप्टेशन मुकम्मल कर चुके हैं. उसमें मुख्तलिफ जो सिनेरियोज़ हैं उनको तब्दील किया गया है, मुख्तलिफ जो मिसालें उसमें दी गई थी उनको तब्दील किया गया ताकि हमारे जो लोग हैं जब उन तक बात पहुँचे तो उनको वो कोई बात अजीब ना लगे बल्कि उनके अपने कल्चर की बात हो. Caire strongly contributed in enactment of women's legislations in Sindh and KP and provided support for the effective implementation of legislations in both provinces. Program advocacy efforts actively engaged all the key stakeholders, including advocacy networks, CSOs, legislators, and the policy makers. Number of research studies have been conducted to inform policy advocacy interventions under the program. Advocacy efforts resulted in enactment of legislations on domestic violence and prevention of early and forced child marriages in Sindh. While in KP, the provincial cabinet has approved the extension of pro-women's legislation to Pata that allows vulnerable women and girls to exercise their rights under the provincial legislations. Program also meaningfully supported the provincial commissions on the status of women and the national and provincial women's parliamentary caucuses to strengthen their role. आज अगर मैं बात करूं जो कि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारे लॉ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जो कि हमारा लॉ हमें बताता है कि आपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, केपी में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें आपने डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन बनानी है. ये 4 साल से हम लगे हुए थे कोशिश में कि हम ये बनाएं और हमारा ये जो ऑन द ग्राउंड गवर्नमेंट मैकेनिज़्म है डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए या वुमेन इश्यूज़ को रोकने के लिए, ये हम किस तरह से हम ये तामीर करें. सो ट्रोकेयर ने हमें बहुत सपोर्ट किया और आज मैं ये कह रही हूँ कि हमारे 23 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 1 साल के अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तश्कील कर दी हैं. Notification for the establishment of Sindh Commission on the Status of Women was issued after strong advocacy efforts by one of Caire's partners in Sindh. हमारे बजटरी एलोकेशन में फिक्सचर, फर्नीचर, इक्विपमेंट का कोई पैसा नहीं रखा गया, तो उसमें Caire का ताउन मुझे नज़र आता है. ये देखें, ये कंप्यूटर रखे हैं, फैक्स मशीन हमें दी, प्रिंटिंग मशीन दी, हमारा कमेटी रूम उन्होंने डेवलप किया है, हमने डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट में उसको बनवाया है उसके हॉल में. तो काफ़ी काम जो हमारा इनिशियली शुरू जो हुआ है वो उनकी मदद से हुआ है. The Australian government, in partnership with Caire, launched the National Media Advocacy Campaign Purazm in 2016
to contribute to all three programs' objectives, including prevention of violence against women and girls, provide help when it's needed, and guarantee laws that protect women and girls. टूरिज्म मुहिम का मकसद सिनफी तशद्दुद के बारे में आगाही पैदा करना है और लोगों को मालूमात देनी है कि सिनफी तशद्दुद के शिकार लोग कानूनी मदद, पनाहगाह, तिब्बी और नफ्सियाती मदद कहाँ से हासिल कर सकते हैं। औरतों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मुतल्लिक़ क़वानीन के बारे में मालूमात फ़राहम करना भी है। इस सिलसिले में 3 मौज़ूआत को मलहूज़ ख़ातिर रखा गया है। वालिद का किरदार बहैसियत ज़ामिन कि वो सिनफी तशद्दुद को ख़त्म और कम कैसे कर सकते हैं। पुलिस हसास तरीके से सिनफी तशद्दुद के शिकार लोगों के मसाइल हल कर सकेगी और घरेलू तशद्दुद के मुतल्लिक़ा क़वानीन को मज़बूत बनाया जा सकेगा। Media, being an effective power in changing attitudes, has been successfully utilized to sensitize general public on GBV issues. Through a prudently designed media campaign on TV, social media and other mass media, including innovative tools like voice box activities, TV roadshows, radio call-in shows, PSMs, print media and outdoor campaigns in the targeted areas. The campaign successfully engaged a critical mass through increased awareness of gender-based violence and initiated a process of attitudinal change. The Purazm campaign, Gender Equality, Our Commitment, is a call to youth, men and women to reaffirm their commitment to promote gender equality and violence against women and girls.